मेरे प्यारे भाइयों, कैसे और आप सब। तो स्वागत है भाई फिर से आप लोगों के एक और इंटरेस्टिंग भाई आज का एक और न्यू भाई वीडियो में। तो गाइस आप लोगों ने टाइटल सामने देखो तो पता चल ही गया है जो कि ये मेरे पास जो फोन है जो कि Realme P3। तो इस फोन के अंदर मैं आज आप लोगों के साथ भाई करके दिखाऊंगा भाई फ्री फायर का गेम प्ले टेस्ट। तो भाई कैसे कैसे भाई FPS देने वाला है, उसके साथ ही साथ भाई कैसे कैसे फोन हीट करता है, उसके साथ ही साथ फोन कितना ज्यादा टेम्परेचर बैटरी ड्रेन कितना ज्यादा करता है वो मतलब पूरा लाइव दिखाऊंगा। आप लोग अगर भाई पूरा गेम प्ले को देखोगे तो भाई आप लोगों को पता लग जाएगा और लास्ट में जाके मैं आप लोगों को कंक्लूजन के अंदर बताऊंगा कि भाई ओवरऑल मेरे को ये फोन कैसा लगा है, आप लोगों को इस सेल के अंदर ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं, वो भी मैं आप लोगों को हर चीज बता दूंगा यार। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को तैयार शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से भाई पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भाई मतलब ये जो वीडियो देख रहे हो तो भाई कौन से स्टेट से देख रहे हो या फिर भाई कौन से सिटी से देख रहे हो, वो भाई जोर से वो कॉमेंट में शेयर कर देना, क्योंकि मैं तो भाई देखूं कि भाई कौन कौन लोग भाई ये मेरा जो वीडियो है भाई कौन से स्टेट या फिर भाई कौन से सिटी से देखता है। तो इसके लिए आप लोग भाई जोर से वो कॉमेंट में शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते, लेकिन उससे पहले बताओ भाई मैं सुदीप वाचिंग माई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को तैयार शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैं फ्री फायर मैक्स के ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ग्राफिक्स वगैरह होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अरे भाई ये क्या सब आ रहा है। तो सबसे पहले अरे भाई तो चलो सबसे पहले भाई सेटिंग के अंदर खोल के आप लोगों को भाई यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर चल के आप लोगों को यहाँ पे मैक्स सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली दिखा रहा हूँ, जो कि मैं सिंपली इसको ओके कर ले रहा हूँ। उसके साथ ही साथ भाई साउंड के अंदर आके यहाँ पे भाई बहुत सारे मतलब बहुत 300% तक आप लोगों को यहाँ पे बूस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को सिंपली यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैमरा के अंदर। और उसके साथ ही साथ भाई एक बार आप लोग साउंड को सुन लेना, मैं मतलब थोड़ी देर के लिए शांत हो जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोगों को डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक नीचे के साइड से है और ऊपर के साइड से एक और है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह जो कि मैं मैक्स पे कर ले रहा हूँ, उसके साथ ही साथ मैं साउंड को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ भाई यहाँ पे जो गेम फीचर्स है उसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स दिखा देता हूँ, जो कि भाई आप लोगों को यहाँ पे जो GT मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ भाई आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर भी देख सकते हो। उसके साथ ही साथ भाई बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। भाई मोशन कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई आप लोग के हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ भाई आई कंफर्ट फॉर गेमिंग भी कर सकते हो, कॉल ब्लॉकिंग भी कर सकते हो, जो कि भाई आप लोगों के हिसाब से कर सकते हो दोस्तों सेट वगैरह। और बाईपास चार्जिंग ये बहुत सारे भाई आप लोगों को फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई आप लोगों के हिसाब से कर सकते हो दोस्तों, जो कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ भाई आप लोग यहाँ पे सिस्टम स्टेटस का और उसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को FPS मीटर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्लास स्क्वाड रैंक का गेम प्ले खेल के दिखाऊंगा। उसके बाद जाके मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली जो BR का गेम प्ले है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलो भाई सबसे पहले एक गेम प्ले को लगा लेता है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ बताऊंगा। और उसके साथ ही साथ सबसे पहले भाई बैटरी को दिखा देता है, जो कि भाई अभी 27% पे अभी बैटरी बच रखा है। तो चलो भाई एक गेम प्ले खेल के देखते हैं, और मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ। और FPS मीटर के अंदर भाई आप लोग ध्यान देना, क्योंकि भाई गेमिंग करते टाइम तो मेरे को मतलब इतना ध्यान तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप लोग भाई देख लेना। तो चलो भाई इस गेम प्ले को सीधा स्टार्ट करते हैं और मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा। First Doom. Help me! Double takedown. Double takedown. First Doom. Double takedown.
doom. Double takedown. First doom. Double takedown. First doom. Double takedown. First doom. Double takedown. Double takedown. First doom. Double takedown. तो खैर गाइस इसी के साथ गाइस 2-3 मैच मैंने खेल लिया हूँ और ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस रहा है जो कि भाई एपीएस भाई अभी 30 एपीएस के अंदर था, क्यों था भाई मेरे को पता नहीं, जो कि मैं आप लोगों को सिंपली दिखा दे रहा हूँ। उसके साथ ही साथ भाई मेरा यहाँ पे भाई जीटी मोड भी भाई ऑन था और 38 डिग्री पे अभी फ़ोन का टेम्परेचर पहुँच गया है। लेकिन भाई फ़ोन का पीछे के साइड से भाई उतना ज़्यादा हीट तो भाई अभी फील नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को भाई बता दूँ यार। और उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपली मैं दिखा देता हूँ ग्राफिक्स वगैरह, जो कि भाई 20 मतलब 30 एपीएस के अंदर भाई चल रहा था। भाई ये क्या मतलब कैसे कैसे चल रहा था भाई मेरे को खुद पता नहीं है, जो कि डिस्प्ले के अंदर चल के भाई आप लोगों को यहाँ पे मैक्स सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कैसे मतलब क्यों चल रहा है मतलब कैसे चल रहा है वो मेरे को खुद भी पता नहीं है। और अभी भाई अगर भाई फ़ोन का बैटरी का बात करें, जो कि भाई 2-3 गेम मतलब जो क्लास स्क्वाड का गेम प्ले के बाद जो कि भाई आप लोगों को 24% पे देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं करने वाला हूँ जो कि भाई इसका जो BR रैंक का गेम प्ले, जो कि मैं आप लोगों को भाई और भी तबाही वाला उसके साथ ही साथ भाई एपीएस मीटर के साथ करने वाला हूँ। तो भाई आप लोग भाई गेम के अंदर पूरा बने रहना। स्क्वाड का गेम प्ले था वो भाई आप लोगों को कैसा लगा है वो भाई जरूर से कमेंट में आके शेयर करके जाना दोस्तों।
तो दोस्तों ये मैं बीआर गेम प्ले के ऊपर आ चुका हूँ और जो कि भाई अपडेट देने के बाद ये थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ट्रेंड वगैरह ऐड हो गया है। तो भाई हम लोग फिर से पीक के अंदर कूदेंगे और मैं तो भाई वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ। आप लोग भाई सिंपली गेम को एंजॉय करना, आप लोगों को भाई बेहतर समझ में आएगा। तो चलो गाइस आप लोग सिंपली गेम को एंजॉय करो। और अभी भाई मेरा 24% पर भी बैटरी हो रखा है, तो देखते हैं पूरा गेम प्ले होने के बाद कितना ज़्यादा बैटरी बच रखा है। और बहुत सारा बंदा आ रहा है, आप लोग गेम प्ले को एंजॉय करो। मैं सीधा आप लोगों के साथ कंक्लूजन के पार्ट के अंदर मिलूंगा।
Triple takedown. तो खैर गाइस इसी के साथ गाइस हम लोगों ने तो यहाँ पे हार गए हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत टेम्परेचर वगैरह दिखा देता हूँ, जो कि भाई अभी 39 डिग्री पे पहुँच रखा है। अगर भाई बैटरी परसेंटेज का बात करें, जो कि भाई अभी 20% पे अभी हो रखा है। तो भाई सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पे जो सिंपली कंक्लूजन वाला होता है, और एपीएस उसके साथ ही साथ भाई जो कि 30 और 31 के अंदर ही दे रहा है भाई फ्री फायर के अंदर। लेकिन और भी काफ़ी सारे मैं गेम प्ले टेस्ट करूँगा, या फिर भाई चैनल के अंदर आ चुका है या फिर भाई आने वाला है। तो भाई आप लोग चैनल पे भाई बने रहना। और चलिए भाई सिंपली मैं आप लोगों को कंक्लूजन के अंदर बताता हूँ कि भाई ये फ़ोन आप लोगों को लेना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर या फिर नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने देख लिया है, जो कि मैंने मैक्स सेटिंग के अंदर फ्री फायर का मैक्स का गेम प्ले टेस्ट किया है। तो इसके अंदर भी मेरे को थोड़ा बहुत एपीएस जो है भाई 30 एपीएस के अंदर देखने के लिए मिल रहा था। क्यों मेरे को खुद पता नहीं है, लेकिन भाई ओवरऑल अगर भाई बात करें, जो कि भाई बहुत बढ़िया से चल रहा था। लेकिन और उसके साथ ही साथ दोस्तों इस फोन के अंदर अगर भाई एपीएस का बात करें, जो कि मैंने आप लोगों के शेयर कर दिया है, मतलब कर दिया है। और टेम्परेचर का बात करें तो भाई उतने ज्यादा टेम्परेचर मेरे को देखने के लिए नहीं मिला है। अगर भाई बैटरी ड्रेन का बात करें, जो कि मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर कर दिया हूँ, आप लोगों ने अगर पूरा गेम प्ले देखा है तो भाई आप लोगों को पता लग जाएगा दोस्तों। और ऐसा दोस्तों आशा करते हो कि मैं आप लोगों को हर चीज समझा दिया हूं। अगर कुछ भी डाउट कंक्लूजन क्वेरी रहता है तो भाई मेक से जोर से मेरे को कमेंट में आकर पूछ लेना, और मैं आप लोगों को वहां पे रिप्लाई सॉल्यूशन हर एक चीज कर दूंगा यार। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भाई जरूर से कमेंट में आकर शेयर करके जाना। आप लोगों को फीडबैक भाई जरूर से कमेंट में आकर शेयर करके जा सकते हो। और उसके साथ ही साथ भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना, जो लोग भाई ये फोन भाई फ्यूचर के अंदर लेने वाला है, या फिर भाई जो लोग भाई ये किसी का अगर भाई दोस्त रिश्तेदार ये फोन लेने वाला है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। और उसके साथ ही साथ इस वीडियो का आप लोगों को अच्छा लगता है और ऐसी तरह वीडियो देखना चाहते हो और ऐसी तरह भाई मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ ऑनेस्ट रिव्यू में शेयर करते रहता हूं। तो चलेगा आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप वॉचिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय।